આવી રીતે ઓંકાર અને ગાયત્રીનો જપ કરીને તમે દરરોજ યોગનો પ્રારંભ કરો. આજનો વિષય છે થાઇરોઇડ, હાઇપોથાઇરોઇડ, હાઇપરથાઇરોઇડ. થાઇરોઇડની ગતિવિધિ ઓછી થઈ જાય અને હાઇપો કહેવામાં આવે, અને વધારે સક્રિય થઈ જાય અને હાઇપર કહેવામાં આવે. બંને જ ખતરનાક છે. હાઇપોથી વજન વધે અને હાઇપરથી વજન ઘટે, અને એને કારણે પછી ઘણી બધી ચક્કર આવે, આંખો બહાર નીકળી જાય, હાર્મોનલ ઇમ્બેલેન્સ થાય, હાર્ટ ઉપર એનો અસર આવે, અને આખી જિંદગીનું સંતુલન બગડી જાય છે. ચક્કર આવતા હોય, ગુસ્સો આવે, નીંદ ઓછી આવે, અને બધું ડાયજેશન ઉપર અસર થાય. અને આ થાઇરોઇડને તમે કંટ્રોલ જ નહીં, ક્યોર કરી શકો છો. એના લાઈવ એક્ઝામ્પલ સાથે આપણે શરૂઆત કરીએ. એમાં બે તો મૂળ પ્રાણાયામ છે. એક તો કપાલભાતિ, બીજો ઊંચાઈ, અને ત્રીજું છે અનુલોમ વિલોમ. કપાલભાતિ અને ઉજ્જાઈથી T3 T4 નો સંતુલન થાય, અને અનુલોમ વિલોમથી TSH નો. તો કપાલભાતિ, ઉજ્જાઈ આ બહુ જ જરૂરી છે, સાથે અનુલોમ વિલોમ. આ કરીને જેને શરૂઆત કરીએ જેનેટિક. ઘણા બધા તો એવા છે અહીંયા જે એની દવા જ નથી લીધી. અંજલિ છે, અનિતા છે, એ એલોપેથીની દવા જ નહીં લીધી. એ ફક્ત આયુર્વેદનો આ ધનિયાનો ઉકાળો, પછી ત્રિકુટા અને બહેડાનો ચૂર્ણ, નાનકડા ઉપાયો, કપાલભાતિ, ઉજ્જાઈ વધારે કરીને આ મટાડી દીધા. પણ જેનેટિક મટી જાય. અને બંને બેન અમારી મહારાષ્ટ્રથી જ છે. છાયા બંને. એક छाया कहाँ से आई है? मुंबई से. कहाँ से आई हो? नागपुर. और दूसरी छाया जालना और मुंबई से, नागपुर से. हाँ, कब से था तुमको? कपालभाति करो. माइक पास में रखो. मेरे को 20 साल से सर. 20 वर्ष से. और अब कितने दिन में ठीक कर लिया? मेरे 5 साल हुए, गोली बंद हो गई थी, कोई दवाई नहीं है. और अब थायराइड नॉर्मल है? थायराइड से क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस थे? मैं चलती थी तो मेरा सब बैलेंस किधर भी चले जाता था, और बाल चले गए थे, और ऐसे डॉक्टर लोग ऐसे का ये रखते थे तो ऐसा कांपते थे? हाँ, ऐसे उंगलियां सब कांपती थी. तो थायराइड है ना, थायराइड ने लीधे कॉम्प्लिकेशंस अब થઈ ગયા. और किससे आया आपको थायराइड? माता पिता से? वो माता पिता में, हमारे रिश्तेदार में था, माता पिता को नहीं. हाँ, तो रिश्तेदारी में था. तो कहाँ से आया? नाना नानी दादा दादी किसी को तो है. हाँ. अब पहले तो चेक ही नहीं करवाते थे. लेकिन परिवार में कईयों को है. चलो अगली को देना. ओम स्वामी जी. ओम बेटा. मुझे 10 साल पहले थायराइड डायग्नोस हुआ था. तो 3 साल तक मैंने कंटिन्यू लिया थायरोक्सिन. पहले 25 mg था, फिर डॉक्टर ने उसको इंक्रीज करके 50 mg किया, और बोला एक दिन भी मिस नहीं करना, या तो फिर लाइफ पे खतरा आ जाएगा, या आंखें बाहर आ जाएगी, या तो फिर गले में सूजन आ जाएगा. आंखें बाहर आ जाएंगी, गले में सूजन आ जाएगी, हार्ट पर असर आएगा. हार्ट पर असर है. मुझे हार्ट बीट भी पल्पिटेशन ज्यादा होता था. तो फिर मुझे खा कर सारा कैल्शियम ड्रेन हो गया पूरे बॉडी में. ऐसे लग रहा था हड्डी कट गई है. और फिर जॉइंट कैल्शियम ड्रेन होना शुरू हो गया. हाँ, उसको कॉम्प्लिकेशंस. तो नजर भी ब्लर होने लगी. तो मैंने आपका योगा स्टार्ट किया, और एकदम ही नया बॉटल खोला ही नहीं कि मुझे खाना ही नहीं है अब से. 3 साल तक कंटिन्यू खा के पूरी हालत खराब हो गई. और अभी भी उसके कॉम्प्लिकेशंस है, लेकिन थायराइड नहीं है. मुझे 5 साल 4.5 साल से ज्यादा हो गया, 5 साल होने आए कि मुझे बिल्कुल भी थायराइड नहीं है. मैं हमेशा चेक कराती रहती हूँ. अभी आते वक्त भी चेक कराया हुआ है. मुझे बिल्कुल भी थायराइड नहीं है, पूरा नॉर्मल रेंज में है. नॉर्मल रेंज में. और कुछ हड्डियां मजबूत की? हाँ, अभी मैंने सप्लीमेंट लिया था 2 महीना पहले, D3 कंटिन्यू लेती रहती हूँ साल में 2-3. और धूप में बैठा कर सो. और मुझे इनवॉलंटरी मूवमेंट्स और फेशियल एक्सप्रेशंस के अभी प्रॉब्लम है. उसके कॉम्प्लिकेशंस अभी उससे निकल ही रही हूँ मैं. 3 साल खाने से 3 साल खाने से कॉम्प्लिकेशन सब तक है. इसलिए मैं कहता हूँ पर टेम्परेरी रिलीफ. हाँ, और नुकसान परमानेंट. तो इनवॉलंटरी मूवमेंट को ठीक करने के लिए योगराम आए इतने दूर से.
ठीक हो जाएगा बहन, है ना अंजलि, ज्योति? कितनी उम्र है तुम्हारी? 35 35, छोटी सी उम्र में। और हुआ कब था ये थायराइड? 25 पे। 25। हाँ, तो ये 10 साल पहले से एक चक्रव्यूह में फंस गई, अब निकल हाँ, गई है। चल। बहुत परेशान थी और अभी भी हूँ, पर थायराइड नहीं है। हाँ, तो अब 2-3 बहनें तो ऐसी हैं, अंजलि और अनीता, इनको देते हैं। इन्होंने एलोपैथी ली ही नहीं कि भाई अपने कोई चक्रव्यूह में नहीं पड़ना, उनको देना अंजलि को। अंजलि और अनीता एलोपैथी नहीं, दवा प्रारंभ ज नहीं करी है। चलो। स्वामी जी ओम नमः। स्वामी जी, मुझे 8 साल पहले थायराइड हुआ था, जो कि पहले 8 था, उसके बाद धीरे धीरे 11 पर पहुंच गया। डॉक्टर ने मुझे बोला एलोपैथिक मेडिसिन लेना बहुत ज़रूरी है। उन्होंने मुझे लिख कर दी। मैंने एक दिन एक टैबलेट खाई, पर मेरा मन नहीं माना। फिर मैंने धनिए का पानी शुरू कर दिया। लगातार धनिए का पानी पीती थी। फिर डॉक्टर ने बोला लगातार धनिए का पानी पीना भी नुकसानदायक है। अच्छा। तो मैंने पहले 1 महीने पिया, 1 हफ्ते के लिए छोड़ा, फिर 1 महीने पिया, फिर 1 हफ्ते के लिए छोड़ा। इस तरह से 1 साल में मेरा थायराइड पूरी तरह से ठीक हो गया। तो धनिया का, अब उस समय थायरोग्रिट आई नहीं थी। तो पहले धनिया का पानी बताते थे, और त्रिकुटा और बहेड़ा बताते थे, काचना और गूगल बताते थे। उसकी जगह भी ये थायरोग्रिट निकाल दिया अभी जो त्रिकुटा और ये आपने बताया, ये भी हमारे यहाँ इजीली अवेलेबल नहीं होती है मार्केट में। तो उस टाइम धनिया का पानी ही ऑप्शन था। तो धनिया का पानी पी करके ठीक कर लिया। अब कितने साल हो गए? मुझे 8 साल हो गए थे, अब 7 साल से बिल्कुल खत्म है। ये लो, 7 साल से पूरी तरह से खत्म है। खाली धनिया का पानी पिया, फिर उज्जाई करती रही ना, उज्जाई और कपालभाति। कपालभाति और अनुलोम विलोम करती थी मैं। बस, उज्जाई भी नहीं किया इसने। ऊंचाई का मुझे पता ही नहीं था उस टाइम। तो अब एलोपैथी की दवा इसने कहा कि लोगे तो कुछ और, जैसे ये ज्योति उसका परिणाम भुगत के बैठी। कॉम्प्लिकेशंस का डर था कि एलोपैथिक का कॉम्प्लिकेशन होता है, पक्का। तो आयुर्वेद की तरफ जाना ज्यादा ठीक है। तो इसने, अंजलि ने शुरू से ही अपनी अंजलि आयुर्वेद से भर ली। और अनीता का देना। मुझे 1 जनवरी को पता चला था थायराइड का। मैं सो के उठती थी तो मेरे हाथ पैर पूरे फूल जाते थे। अब मैं सोचती थी कि मेरे क्यों फूल जा रहे हैं, और मैं एक्सरसाइज करती थी फिर भी नहीं, वो ठीक हो जाते थे। फिर अपने 2 दिन ठीक हो जाते थे। ऐसे करते करते मैं फिर चेक करवाई, मुझे थायराइड निकली। और डॉक्टर को दिखाएं तो डॉक्टर दवा लेने बोले। मैंने कोई दवा नहीं ली, यूट्यूब खोली, आपके इंडिया लाइव टीवी में मैं देखी और एक्सरसाइज शुरू की। मैं सिर्फ एक्सरसाइज से ही अनुलोम विलोम, शीर्षासन, हलासन, उज्जयी, सिंहासन, ये सब मैं करके 3 मंथ में मैं कंप्लीट कर ली सारी थायराइड। मैं अब एकदम नॉर्मल हूँ। अब T3 T4 TSH नॉर्मल है। यस। और अभी थोड़ी प्रॉब्लम आ गई, सफेद दाग यस, है। मैं वैक्सीन लेने के व्हाइट पैचेज। व्हाइट पैचेस आ गई है। और ये आए किसके बाद? वैक्सीन के बाद। वैक्सीन के बाद व्हाइट पैचेज। वैक्सीन के बाद बहुतों को जोड़ों में दर्द, किसी किसी के तो हाथ पैर ही रह जाते हैं। इतनी रफ्तार में हो रही है, ऐसा हो जाता है। इतनी रफ्तार में हो रही है कि ईचिंग आ रही है और वो स्किन गायब हो जा रही है। खुजली आती है। अब कायाकल्प सर्वकल्प रेगुलर खाना। जी, मैं कायाकल्प सर्वकल्प भी स्टार्ट कर चुकी हूँ। हाँ, कायाकल्प सर्वकल्प रेगुलर खाना। यहाँ पूरा बस्ती से लेकर के, और कायाकल्प की और सर्वकल्प की बस्ती में गोधन अर्क लेके, कायाकल्प की ही बस्ती, शंख प्रक्षालन, और फिर पूरा ये स्नेहन, स्वेदन, विरेचन भी कर लो आप पंचकर्म में ना, तो पूरा ये अंदर से खत्म हो जाए। जी, मैं पंचकर्म कर रही हूँ। पंचकर्म में विरेचन भी कर लो, और ये सारी चीजें, और साथ में स्टीम भी ले लो। और यज्ञ की भस्म का पानी मैंने बोला था ना आज, ये भी हमारे बॉडी के अंदर जो भी वैक्सीनेशन से, रेडिएशन से, अलग अलग प्रकार की जो जहरीली चीजें खाते, सिंथेटिक चीजें, ये सिंथेटिक, ये सब ये वैक्सीन भी सिंथेटिक चीजों से बनाते हैं। बहुत बुरी हालत रहती है। तो इनका बॉडी को डिटॉक्स करने में यज्ञ की भस्म का पानी, ये छोटी छोटी चीजें, और नमक आदि टोटली बंद करके, नमक और मीठा आदि तली हुई चीजें, नेचुरल फूड के ऊपर आ जाओ। तो मैं घर पे ही नीम का लेप बनाकर, उसमें कायाकल्प तेल, गौमूत्र डालकर मैं लेप लगाकर धूप में बैठती थी। तो अभी कहाँ कहाँ आया है? मुंह पर और पूरे मुंह पे और ये पैर पे। तो पैर पे यहाँ तक आ गया। हाँ। तो ये 4-5 तो बड़े कॉम्प्लिकेशंस आ रहे हैं। जिनको टाइप 1 डायबिटीज़ है उनको हमने एक बार ठीक कर दिया, जिनकी फिर वापस उनका जो है इंसुलिन शुरू हो गया।
टाइप 1 वालों के लिए, जिनको बहुत ज़्यादा अस्थमा, उनके लिए, जिनको बहुत ज़्यादा आर्थराइटिस आ रही फैक्टर, हमने एकदम नेगेटिव कर दिया था, वापस वो आर्थराइटिस में जकड़ में आ गया, किसी को तो फाइब्रोमाइल्जिया, किसी को जोड़ों में दर्द, किसी को ये शरीर में कंपन, और किसी को तो हाथ पैर रह ही गए, जो है पैरालिसिस जैसा हो गया, नर्वस सिस्टम की प्रॉब्लम आ गई, ये किसी को सफ़ेद दाग। ये तो पूरे दुनिया के अंदर सर्वे नहीं करवाने दे रही है कंपनियां, और सरकारें भी डरी हुई हैं, इसलिए बोले जो लोग डर जाएंगे, इसलिए इस कॉम्प्लिकेशंस के बारे में बात ही मत करो, जो भी होंगे तो झेल लेंगे लोग अपने आप। तो हाँ, तो यदि पूरे वर्ल्ड में हर दवाई के कॉम्प्लिकेशंस के बारे में नेट के ऊपर लिखा मिलेगा, लेकिन कोरोना की वैक्सीन के बारे में कोई लिखा हुआ नहीं मिलेगा। तो ये कोरोना की वैक्सीनेशन खास करके जिनको ऑटोइम्यून डिजीज हैं, जिनको लिकोडर्मा बहुत ज़्यादा, लिकोडर्मा, स्क्लेरोडर्मा, बहुत ज़्यादा सोराइसिस, बहुत ज़्यादा एक्जिमा, एक्यूट सोराइसिस, जिनको बहुत ज़्यादा रोमेटॉइड अर्थराइटिस, टाइप 1 डायबिटीज़, पहले उनको अच्छा कर लो। और अच्छा करने के बाद में भी बहुत लोगों ने अपने आप को ठीक कर लिया था, वापस वैक्सीन लगाई तो फिर दोबारा से उभर गए रोग। इसका मतलब है बॉडी में रिएक्शन बहुत खतरनाक करती है, बाल झड़ना और फिर ये सब दम उखड़ना और पल्पिटेशन हाई होना, डाइजेशन का खराब होना, ये तो सब कोरोना और कोरोना के वैक्सीन दोनों का ही सामान्य लक्षण है। लेकिन इसके साथ साथ ये जो ऑटोइम्यून डिजीज और बहुत इनक्योरेबल डिजीज हैं, उनको बहुत सावधानी पूर्वक ही इस वैक्सीनेशन के बारे में सोचना चाहिए, लेकिन इसको बाहर निकाल देंगे। हाँ, तो ये तो कुछ लाइव एग्जाम्पल्स हमने दिए कि कपालभाति, उज्जाई और ये अनुलोम विलोम, ये 3 तो प्राणायाम जरूरी है। आ 3 प्राणायाम बहुत जरूरी है। એની સાથે સાથે 5 આસનો, 5 આસનોમાં એક તો સિંહાસન છે, ચલો सब करो। આ સિંહાસન બહુ જ જરૂરી છે। પછી આ તો થાઇરોગ્રીડ, અને પછી ગળામાં ગાંઠ થઈ જાય તો સિસ્ટોગ્રીડ અને કર્ક્યુમિન ગોલ્ડ કે આ ધણિયાનું પાણી, આ બધું પ્રયોગ કરી શકાય છે। પણ આ અને જેનાથી થાય આ ઉષ્ટ્રાસન કરી લેજો। આ ઉષ્ટ્રાસન પછી મત્સ્યાસન, સર્વાંગાસન, હલાસન, ભુજંગાસન, આ આસનો થોડા કરી લે। જેનાથી પૂરું નહીં થાય તો અડધું કરી। આ ઉષ્ટ્રાસન, અર્ધ ઉષ્ટ્રાસન, અને જેનાથી થાય એ આમ તો પદ્માસનમાં બેસીને પાછળ વળવાનું જ બહુ જ અઘરું છે, પણ જેનાથી થાય એ આમ કરી લેજો। આ અને પછી થાઇરોઇડ માટે સર્વાંગાસન, હલાસન, અને જેનાથી સર્વાંગાસન હલાસન નહીં થાય, કપાલભાતિ, ઉજ્જાઈ જ વધારે કરી લેજો, અનુલોમ વિલોમ કરી લેજો। કપાલભાતિથી થાઇરોઇડ, પેરાથાઇરોઇડ, અનુલોમ વિલોમથી પિટ્યુટરી ગ્લેન્ડ સારું થાય, T3 T4 સારું થઈ જાય કપાલભાતિ ઉજ્જાઈથી, અને TSS સારું થઈ જાય છે અનુલોમ વિલોમ। તો આ સર્વાંગાસન, આ હલાસન, એક એક આસન આવી રીતે 5-5 મિનિટ કરવાનું। અને સાથે આ નારિયેળના લાડુ ખાતા હોય ને, આ જે ગોળમાં, શક્કરમાં કે ખાંડમાં નારિયેળના લાડુ બનાવ્યા છે અમે। આ બધા કરી લે। અને જેનું થાઇરોઇડના લીધે વજન વધી ગયું હોય તો પછી આ અર્ધહલાસન, આ પાદવૃત્તાસન, બંને પગથી એક એક પગથી આ અર્ધલાસન, પાદ વૃત્તાસન, દ્વિચક્રિકાસન, આ વધારે કરી લેજો। 50-50, 100 વાર કરી લેજો આવી રીતે। અને આ 3 અભ્યાસો તો આ સૂઈને ચક્યાસન અને સ્થિત કોણાસન બેસીને
થાયરોઇડને લીધે જેને વજન વધી ગયું, થાયરોઇડને લીધે જેને વાળ ખરતા હોય એને કેશ કાંતિ શેમ્પુ, કેશ કાંતિ લેપ અને કેશ કાંતિ એડવાન્સ તેલ અને સર્વાંગાસન, હલાસન એ તો બહુ જબરદસ્ત લાભ કરે એમાં. શીર્ષાસન જેનાથી થાય તો વધારે સારું. જે બંને પગથી નહીં કરી શકે તો એક એક પગથી આમ દ્વિચક્રિકાસન અને આ પાદવૃત્તાસન. જેને જેટલું થાય એક એક પગથી, બંને પગથી અર્ધલાસન, પાદવૃત્તાસન, દ્વિચક્રિકાસન અને જેનાથી થઈ જાય એ બધા ભુજંગાસન પણ કરી લેજો. એનાથી થાઇરોઇડ પણ સારું થાય, વજન પણ ઉતરે ને સ્ટ્રક્ચરલ બેલેન્સ થાય એનાથી. અને જેને થાઇરોઇડને લીધે વજન ઉતરી ગયું હોય એ 100-100 આ ભુજંગાસન અને સૂર્ય નમસ્કાર કરી લેજો. અને પાચન તંત્રને સારું કરવા માટે પવન મુક્તાસન, ઉત્તાન પાદાસન કરી લેજો. પવન મુક્તાસન, ઉત્તાન પાદાસન, નૌકાસન અને બેસીને પછી મંડૂકાસન અને શશકાસન. એનાથી પાચન તંત્ર સારું થાય તો જેને વજન ઉતરી ગયું હોય એ વધશે એનાથી. ત્રિકુટા, બહેડા, કાચનાર, ગુગ્ગલ પહેલા અમે ટ્રેડિશનલ ઔષધિઓ આપતા હતા. અત્યારે તો અમે થાઇરોઇડ માટે થાઇરોગ્રીટ કરી દીધી છે. બહુ જ ગાઢ થઈ જાય થાઇરોઇડમાં તો સિસ્ટોગ્રીટ અને કર્ક્યુમિન ગોલ્ડ લઈ લેજો. કાચનાર ઘનવટી કે કાચનાર ગુગલ વૃદ્ધિ બાધિકા વટી લઈ લેજો જમ્યા પછી. ભૂખ્યા પેટે સિસ્ટોગ્રીટ અને આ કર્ક્યુમિન ગોલ્ડ જે મારે અહીંયા સામે મૂકેલી છે આ લઈ લેજો. આ મંડૂકાસન. પાચન તંત્ર માટે આ યોગ મુદ્રાસન, મંડૂકાસન, શશકાસન, યોગ મુદ્રાસન જે કરતા હોય એનું પાચન તંત્ર એકદમ આવું સારું થઈ જાય. આ નાનકડા ઉપાયો છે. આ બધા કરીને મોટી મોટી બીમારીઓને પરાજિત કરી શકે છે. આવી છે આ યોગ વિદ્યા. અને વધારે કશું નહીં થાય તો ગ્રીવાસન આ તો થાય ને, આમ ફરાવાનું, ક્લોકવાઇઝ એન્ટી ક્લોકવાઇઝ, ગળાને આમ ટાઈટ કરીને. થાઇરોઇડ માટે બધા જ કરી શકે, સિંહાસન બધા કરી શકે. અને કપાલભાતિ જેનાથી સર્વાંગાસન, હલાસન, મત્સ્યાસન નહીં થાય, ઉષ્ટાસન પણ નહીં થાય તો કપાલભાતિ, ઉજ્જાઈ, અનુલોમ વિલોમ તો બધાથી થાય ને. તો કપાલભાતિ, ઉજ્જાઈ, અનુલોમ વિલોમ એનાથી જ થાઇરોઇડ સારું થઈ જાય. અને આ પોઈન્ટ દબાવવાનું. આ નાનકડા ઉપાયો કરીને મોટી મોટી બીમારીઓને અમે પરાજિત કરીએ છીએ. અને એ જ અભ્યાસ અમે દરરોજ બતાવીએ છીએ કે આ બધા બીમારીઓને તમે મટાડી શકો છો. થાઇરોઇડની દવા એ સૂરજ નહીં કરી, તમે જેમ જોઈએ ને અંજલિને ને અનિતાને, ઘણા બધાને જેનેટિકલી હતું એ મટાડી દીધું. અને જે 10-10, 20-20 વર્ષથી અહીંયા ગીતા સચદેવા છે, એને માઇક આપો તો. ગીતા સચદેવાને એને પણ कितने साल से था? ओम स्वामी जी, मेरे को 10 साल से था 10 वर्ष थी હતો એને પણ. હા. और 1 साल पहले मैंने थायरोग्रिड आपका स्टार्ट किया. धनिए का पानी ले रही थी बीच में, और आसन वगैरह, योगासन, प्राणायाम सब आपके साथ कर रहे हैं. तो अभी मेरी दवाई छूट गई है, बिल्कुल नॉर्मल है. कितने दिनों से? 1 साल हो गया स्वामी. 1 साल से दवा बंद થઈ ગઈ. ओम 10 वर्ष થી દવા લેતી હતી. थायरोग्रिड कितनी खाई? सर मैंने स्वामी जी एक सुबह एक शाम को थायरोग्रिड एक या दो हम बोलते हैं, तो इसने तो एक से गुजारा एक कर खाई, लिया. हाँ जी, दिन में 2 बस. और उज्जाई कितनी बार करती थी? उजाई स्वामी जी मैं दिन में 2-3 बार कर लेती थी, 11-11 बार. જ્યારે પણ ટાઈમ મળે દિવસમાં કરી. और सुबह शाम प्राणायाम और एक्सरसाइज 1 घंटा 1.5 घंटा जैसे मिलता था टाइम. તો થાઇરોઇડ अब ठीक कर लिया. 10 વર્ષથી હતું. લોકો આમ કે થાઇરોઇડની એક બાર ટીકડી ચાલુ થાય તો એ તો 100 एलोपैथी मैंने ली, थायरोक्सिन. तो 100 था. हाँ जी. क्या बात है, तो हाई डोज थी. हाँ 11 था मेरा स्टार्टिंग में ना, तो 100 फिर 50 कर दिया था उन्होंने. तो आ तो अभी बिल्कुल नॉर्मल है, अभी मैं थायराइड कोई ની मेडिसिन દવા नहीं ले रही.
લોકો ખાતા હોય તો આ થાઇરોઇડ એના બદલે આ કપાલભાતી જઈ અનુલોમ વિલોમ કરી લો, ધણિયાનું પાણી પી લો. આ ધણિયાનું પાણી અને આ થાઇરોગ્રીડ આ જ લઈ લો ને ગીતાની જેમ. થાઇરોઇડની દવા બંધ થાય, બીપીની દવા બંધ થાય, સુગરની દવા બંધ થાય, સ્ટીરોઇડ બંધ થાય, બધી ઊંઘની દવા, નીંદરની દવા, સ્લીપિંગ પિલ્સ લોકો લેતા હોય, પછી પેઇન કિલર્સ, એન્ટીબાયોટિક્સ, આ બધા ગેસ એસિડિટીની દવા, આ બધા ખાઈ ખાઈને આખા શરીરને બગાડી નાખે. એના બદલ તમે આ યોગ કરશો અને યોગમાં વધારે કશું નહીં થાય તો આ સૂક્ષ્મ વ્યાયામ, ચલો આ સૂક્ષ્મ વ્યાયામ અને પ્રાણાયામ એનાથી જ 99% તમને બેનિફિટ થઈ જાય. આસન નહીં થાય તોય વાંધો નહીં, ફક્ત આ સૂક્ષ્મ વ્યાયામ કરો, સૂક્ષ્મ વ્યાયામ કરો અને પ્રાણાયામ કરો, એનાથી જ 99% તમારી બીમારીઓ મટી જાય. 99% તમને કોઈ ઓપરેશન નહીં કરવું પડે, દવાઈ નહીં ખાવી પડે. ફક્ત આ યોગથી આટલું મોટું લાભ થાય છે, જીવનનો નિર્માણ અને જીવનનો નિર્માણ, મોક્ષ, રોગ મુક્તિ, નશા મુક્તિ, વ્યસન મુક્તિ, બધા જ બંધનોથી, ક્લેશોથી, વાસનાઓથી મુક્તિ. મુક્તિ એટલે છૂટવાનો. યોગ કરો તો જે બુરી વસ્તુઓ છે, બુરી વાતો છે, દુર્વિચાર, દુર્ભાવના, દુર્ગુણ, દોષ, દુર્બલતાઓ છે, રોગ મુક્ત થાઓ જ તમે થાઓ. એ રોગ મુક્ત થવા સાથે સાથે બધા જ વિકારોથી તમે મુક્ત થઈ જાઓ. તો આ સૂક્ષ્મ વ્યાયામ કરજો અને વધારે કશું નહીં થાય તો ફક્ત આ સૂક્ષ્મ વ્યાયામ અને પ્રાણાયામ એનાથી જ આખું તમારું જીવન બદલાઈ જાય. વધારે કશું નહીં થાય તો બસ આ જ કરી લેજો. થોડા થોડા સૂક્ષ્મ વ્યાયામો કરી લેજો, થોડા થોડા પ્રાણાયામો કરી લેજો. એનાથી જ જે વધારે કશું નહીં કરતા હોય, ખુરશી ઉપર બેસીને જેનાથી બેસવાનું પણ નહીં આવે, બેસવામાં પણ તકલીફ થાય, તો એક સૂતા સૂતા જ પ્રાણાયામ કરે તોય એનું જીવન બદલાઈ જાય છે. તો એટલા માટે અમે દરરોજ કહીએ છીએ કે તમે આ યોગને અપનાવશો. યોગ આયુર્વેદ, યજ્ઞ થેરાપી, फिर नेचुरोपैथी पा पंचमहाभूत चिकित्सा, एक मड थेरापी, वाटर थेरापी, आकाश थेरापी उपवास थी थाय, अग्नि थेरापी आप सूर्य न तड़का में बेसीने करो, અને વાયુ થેરાપી તો પ્રાણાયામ છે જ છે. તો આ પૃથ્વી મડ થેરાપીના, મડ વાટર થેરાપીના, પૃથ્વી, અગ્નિ, વાયુ, જળ અને આકાશ, એનાથી તમે પંચમહાભૂત ચિકિત્સાથી, પંચકર્મથી, ષટકર્મથી મોટી મોટી બીમારીઓને તમે પરાજિત કરી શકો છો. એટલે 5-7 પ્રાણાયામો, ભસ્ત્રિકા, કપાલભાતી, अनुलोम विलोम, भ्रामरी, उद्गीत, જેને જેવી જરૂરત હોય, શીતળી, શીતકારી, ચંદ્રભેદી, સૂર્યભેદી, નાડી શુદ્ધિકરણ, રોગાંતક, અભ્યંતર આદિ પ્રાણાયામ, 5-7 પ્રાણાયામો અને 5-7 આસનો દરરોજ કરજો. આર વિચાર ઉપર થોડો ધ્યાન રાખજો. આ નાનકડી વાતોનો પાલન કરીને તમે મોટા મોટા રોગોને તમે મટાડી શકો છો. જે મેં આજ અમે થાઇરોઇડની વાત કરી એમ જ દરેક રોજ અમે નવા રોગોની વાત કરીએ છીએ અને યોગથી કેવી રીતે રોગ મટે છે એના લાઈવ એક્ઝામ્પલ સાથે અમે એબીપી અસ્મિતા ઉપર દરરોજ યોગ ભગાવે રોગ આ કાર્યક્રમ કરીએ છીએ, જેનાથી બધા જ આપ રોગ મુક્ત થાય. રાત્રે 8:30 વાગે હું તો બોલીશમાં મોટો ખુલાસો. સોદાગર કોણ?